अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस डिवाइस के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देंगे, इस डिवाइस का नाम है Vivo V27 Pro। आइए चलते हैं इसको अब डिटेल में स्पेसिफिकेशन को देखते हैं। Vivo V27 Pro, released 2023, the 1st of March, 182 grams, 7.4 mm thickness, Android 13, Fun Touch 13, 128 gigabytes, 256 gigabytes storage, no card slot, 6.78, 1080 times 2000, 400 pixels, 50 MP, 2000, 160p, 8, 12 gigabytes RAM, Dimensity 8200, 4600 mAh, Leap Network Technology, GSM, HSPA, LTE, 5G, LEUNCH. Announced 2023, the 1st of March. Status available. Release 2023, the 1st of March. BODY dimensions 164.1 times 74.8 times 74 mm, 6.46 times 294x029 in, weight 182 grams, 6.4 2 ounces, build glass front, glass back, SIM dual SIM, nano SIM, dual standby, color changing back panel, color display type AMOLED, 1B colors, 120 Hz, HDR10 plus, size 6.78 inches, 111.0 square centimeter, approximately 90.4% screen to body ratio, resolution 1080 times 2000, 400 pixels, 29 ratio, approximately 388 ppi density, platform OS Android 13, Fun Touch 13 chipset, MediaTek Dimensity 8200, 4nm, CPU octa-core, 1 times 3.1 GHz Cortex-A78 and 3 times 3.0 GHz Cortex-A78 and 4 times 2.0 GHz Cortex-A55, GPU Mali G610 MC6 memory card slot, no internal, 128 GB, 8 GB RAM, 256 GB, 8 GB RAM, 256 GB, 12 GB RAM, UFS 3.1 main camera, triple 50 MP, f1.9, wide, 1.56, 1.0 m, PDAF, OIS 8 MP, f2.2, 16 mm, 120, ultra-wide, 1.4, 1.12 m2 MP, f2.4, macro, features ring LED flash, panorama, HDR video 4K, 830, 60 fps, 1080p, 830 fps, Euro Eyes selfie camera, single 50 MP, f2.5 wide, AF features dual LED flash, HDR video 4K, 830, 60 fps, 1080p, 830 fps, Euro Eyes sound loudspeaker, yes, 3.5 mm jack, no 24-bit, 192 kHz audio comms, WLAN, Wi-Fi 802.11a, B, G, N, AC, 6, dual band, Wi-Fi direct, Bluetooth 5.3, a 2DP, LE positioning, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, Navic, NFC, yes, radio, no, USB Type-C, 20, OTG. Features sensors, fingerprint, under display, optical, accelerometer, gyro, proximity, compass, battery type LiPo, 4600 mAh, non-removable charging, 66W wired, 50% in 19 minutes, 72% in 30 minutes. Advertised, MISC colors, magic blue, noble black, models V2231 Saudi Riyal and 22 Halala W kg, head 0.89 W kg, body price about 440, a test performance Antutu 846767, V9 Geekbench 3933, V51 3421, V6 FS Bench 57 fps, ES 3.1 on screen display, contrast ratio infinite, nominal, camera photo video loudspeaker 29.1 LUFS, average battery life endurance rating 121 hours। अब हम इस डिवाइस की पिक्चर्स को देखेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे इसकी
स्पेसिफिकेशन के बारे में, कैसी स्पेसिफिकेशन है सबसे पहले बात करेंगे इसके स्क्रीन साइज़ के बारे में। जो स्क्रीन साइज़ बहुत अच्छा देगा, इसमें 6.78 इंचेस स्क्रीन साइज़ देगा, जिसके पिक्सल 1080 मल्टीप्लाई बाई 2400 पिक्सल देंगे। इसमें आपको काफ़ी अच्छे पिक्सल देखने को मिलेंगे और रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इसकी जो पीपीआई डेंसिटी 399 पीपीआई डेंसिटी देगी आपको, एक अच्छे कलर्स और ब्राइटनेस वाले कलर्स और डिटेल में कलर्स मिलेंगे। कैमरे की बात करें तो कैमरा 50 मेगापिक्सल का देगा, जो आपको बहुत आला क्वालिटी की पिक्चर तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको मिड रेंज वाली पिक्चर मिल सकती है। वैसे आप डे लाइट में बनाएं पिक्चर तो आपको अच्छे कलर कम्बिनेशन देखने को मिल सकते हैं, थोड़ी सी डिटेल कम मिलेगी, लेकिन ब्राइटनेस अच्छी मिल सकती है और डिटेल भी अच्छी मिल सकती है इसमें, और रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छी मिल सकती है। और अवाल देखा जाए तो अगर इस कैमरे से आप पिक्चर्स और वीडियोज़ बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगी। अगर नाइट मोड में बनाते हैं तो आपको कलर थोड़े से डिम मिलेंगे और आपको थोड़ी सी डिटेल भी कम मिलेगी और डार्कनेस में कलर मिलेंगे। अब बात करते हैं हम इसकी रैम की। 8 और 12 GB रैम दी जाती है। इसमें जो चिपसेट लगा है Dimensity 8200 चिपसेट लगा, काफ़ी लेटेस्ट चिपसेट लगा है। चिपसेट की वजह से आपकी जो है वो डिवाइस की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो सकती है, आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है और स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। रैम की बात करें तो रैम की जिस वेरिएंट में ये फ़ोन रैम आ रही है, इसमें 8 GB में भी आपको काफ़ी अच्छी स्पीड मिल सकती है और 12 GB भी बहुत बेहतरीन स्पीड मिल सकती है। और अगर इस डिवाइस से हम गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपको गेमिंग की स्पीड भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, उसके ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं बैटरी की, तो 64 mAh की बैटरी लगी हुई है, इसमें काफ़ी अच्छी बैटरी लगाई गई है। और इसके एंड्रॉयड की बात करें तो इसमें जो एंड्रॉयड आता है, एंड्रॉयड 13 आता है। इसके वेट की बात करें तो इसमें जो वेट है 192 वेट दिया गया है। इसका इतना ज़्यादा वेट नहीं, काफ़ी स्लिम और स्मार्टफोन दिया गया। और इसकी जो थिकनेस की बात करें तो थिकनेस भी इतनी ज़्यादा नहीं दी गई, काफ़ी स्लिम डिज़ाइन दिया गया। इसमें बड़े स्टाइलिश अंदाज में बैक साइड पे 3 कैमरे पुट किए गए हैं और साथ में एक सर्कल में LED फ्लैश दी गई है आपको, और बैक साइड पे ब्रांडिंग भी की गई है। आपको इसमें काफ़ी अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे मार्केट में और काफ़ी अच्छा और स्लिम डिज़ाइन दिया गया है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें जो स्टोरेज है 128 GB और 256 GB स्टोरेज मिलेगी आपको, काफ़ी अच्छी स्टोरेज दी जाती है इसमें। और अगर इसमें जो बैटरी है बैट चार्जर मिलता है आपको 66 वाट का मिलता है, जो 30 सेकंड में आपको 50% की चार्जिंग देता है। और अगर इसमें देखा जाए तो आपको फिंगरप्रिंट जो सेंसर मिलता है वो अंडर डिस्प्ले मिलता है, काफ़ी फास्ट मिलता है। आप फ़ौरन टच करें तो आपका जो डिस्प्ले फ़ौरन ऑन हो जाता है। काफ़ी फास्ट चार्जर दिया, काफ़ी फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाता है इसमें आपको। ओवरऑल देखें जो काफ़ी अच्छी डिवाइस की है, स्लिम है, स्मार्ट है, और देखें तो काफ़ी सेंसर्स भी और फीचर्स भी दिए गए हैं इस डिवाइस। डिज़ाइन की बात करें, अच्छा डिज़ाइन दिए हैं, साइड्स काफ़ी अच्छी और एजेस वाली बनाई गई हैं, शार्प बनाई गई हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और चार्जिंग पोर्ट दी गई है, इसके साथ आपको स्पीकर मिलता है और सेंसर दिया जाता है, और साथ में सिम इंजेक्टर दी गई है। और बैक साइड पे आपको वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और काफ़ी सारे कलर्स में ये मार्केट में अवेलेबल है फ़ोन। जिस प्राइस रेंज में ये ने मुतारफ़ कराया फ़ोन, ये इस प्राइस रेंज में इसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी हैं और इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होगी डिवाइस की, और देखने में काफ़ी अच्छा और स्लिम डिज़ाइन दिया गया आपको। अल्लाह हाफिज़। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।